Hello children, we are studying about the multiple crops. So let's discuss the following table. 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in class. So students, here is the table 1.1 cultivated area over the years. Cultivated area million hectares. 1950 120 million hectare. 1960 130 million hectare. 1970 the cultivated area in million hectare is 140. 1980 140. 1990 140. 2000 140. 2010 155 and 2012 155. Sources: State the Indian Agriculture 2015 to 16. Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. यहाँ से लिया गया है, ये एक कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ से ये डेटा लिया गया. सो हियर इज द गिविंग द ग्राफ. यू कैन सी 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर, 1960 में 130, 1970 में 140, 1980 सेम, 1990 सेम, 2000 सेम, 2010 155 and 2012 also 155. सो ये ग्राफ देखना है, ये डेटा देखना है और इसके बाद आपको इसमें आंसर देना है. यू हैव टू गिव द आंसर्स. इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? व्हाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इरिगेशन के द्वारा एरिया जो है वो बढ़ाया जा सकता है और क्यों? नाउ सेकेंड, you have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops grown in your region. आपने पालमपुर में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, उनको देखा. अब आपको ये टेबल फिल करना है. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. आपने देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा ही हम, एक ही तरीका है कि मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. द अदर वेज इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds. Compared of the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. Farmers of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers, which made ploughing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare.
there was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. So dear children, आप देखा कि मल्टीपल क्रॉप्स किस तरह से जो पालमपुर है वहाँ पर उगाई जा रही है और उससे जो किसान है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। एक ही सीज़न में बहुत सारी जो फसलें ले पाते हैं, उससे उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। पहले जो किसान थे वो सिर्फ फर्टिलाइजर्स के रूप में काऊ डंग को यूज़ करते थे और उनको उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उनको हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स उनको प्रोवाइड कराए गए गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कि ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे होते थे और प्रोडक्शन में बहुत उन्होंने मदद की। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी के साथ साथ इरिगेशन के जो इरिगेशन से जो वाटर सप्लाई थी वो भी पॉसिबल हो पाई, और ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। सबसे पहले जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे उन्होंने इन चीज़ों को ट्राई किया और अपने प्रोडक्शन को उन्होंने बहुत बढ़ाया, और ट्यूबवेल्स का यूज़ किया और बहुत सारे जो मशीनरीज हैं, हार्वेस्टर्स हैं, उनका यूज़ किया, और इस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ा पाया। वीट का प्रोडक्शन उन्होंने बहुत तेज़ी से बढ़ा लिया। इसके साथ साथ जो कि उनका प्रोडक्शन 1300 kg पर हेक्टेयर होता था, वो जब उन्होंने HYV सीड्स को यूज़ किया तब 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होना प्रोडक्शन बहुत बड़ी बात थी। वीट का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस तरह से जो मार्केट में है वीट काफ़ी मात्रा में आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल जो दी गई है, यू हैव टू सी द टेबल। आपको अपने आसपास ये मालूम करना है कि किस तरह की जो फसलें हैं उगाई जाती हैं, जैसे नेम ऑफ क्रॉप, कौन कौन सी फसल है, मंथ शोन किस मंथ में वो उगाई जाती है, मंथ हार्वेस्टेज किस मंथ में उसे काट लिया जाता है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, रेन टैंक्स, ट्यूबवेल, कैनल्स किस पर बेस्ड हैं, वो रेन पर बेस्ड हैं या टैंक्स हैं, वहाँ पर फैसिलिटी, टैंक्स फैसिलिटी, ट्यूबवेल फैसिलिटी, कैनल फैसिलिटी है कि नहीं, ये आपको टेबल इसमें फिल करना है। Let's discuss the exercise. What is the difference between multiple cropping and modern farming method? ये दो आपको आंसर देना है. What is the difference between the multiple cropping and modern farming method? And second one, the following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. Plot this on a graph. Was the Green Revolution equally successful for both the crops? डिस्कस। आपको ये जो डेटा दिया गया है इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ जैसा कि अभी आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा, ये ग्राफ बना हुआ है, इसी तरह का ग्राफ आपको इस डेटा से बनाना है। फिर आपको ये भी बताना है कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो दोनों ही तरह की वीट और पल्स के लिए, दोनों ही तरह की फसलों के लिए क्या सक्सेसफुल रहा। देन व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी ज़रूरत उसकी होती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, ये आपको इसमें बताना है। और एक और है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर, वाई। अब आपको बताना है मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है उसे स्टार्ट करने में एक किसान को ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है पहले जितने कैश की ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है, वाई। ये आपको आंसर देना है। नाउ सजेस्टेड एक्टिविटी, ड्यूरिंग ईयर फील्ड विजिट, टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, फाइंड आउट। अभी तो आपको नहीं जाना है, कोरोना काल है, इसको बाद में करेंगे। विल द लैंड सस्टेन्ड, सो let's start. Will the land sustain? Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to the depletion of the water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years.
once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ अब होने लगा, तो जो ग्रीन जो लैंड है अपनी वो नेचुरल रिसोर्सेस है, और बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ होने की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगी, और कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर यूज़ करने के कारण, इरिगेटेड वाटर यूज़ करने के कारण जो वाटर लेवल है अर्थ से वो भी डाउन हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी है या ग्राउंड वाटर है वो हजारों लाखों वर्षों में बनता है, हजारों लाखों वर्षों में हमारी अर्थ पर स्टोर हो पाता है। एक बार ये खत्म हो गया या समाप्त हो गया तो दोबारा इसे रिस्टोर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो फ्यूचर में करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी बाय योरसेल्फ। After reading the following reports from newspapers, magazines, write a letter to the agriculture minister in your own words, telling him how the use of chemical fertilizer can be harmful. किस तरह से chemical fertilizer harmful हो सकता है। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी न्यूज़पेपर या मैगजीन में, जो कि अभी नीचे दी गई है, और उसको देखने के बाद आपको अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये लेटर लिखना है कि किस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज है वो नुकसान कर सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल which dissolves in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means sometime after their use, the soil will be less fertile than over before. The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. This is the newspaper report, and on the basis of this newspaper report you have to write down the letter to the agriculture minister.